a good credible forecast systems that help us in issuing even early warning, as well as assessing the damages and the losses in a rapid way. During the crisis and disaster situations, it helps us decide the safe routes, safe shelters, safe locations, and also the areas with respect to the affected degree of disaster situation, the worst affected, the moderate affected, and the least affected areas in any disaster, be it cyclone, flood, earthquake, landslide, or any other such disaster. It's not only helpful in naturally happening hazards, but also it's very important in technological as well as industrial and chemical sector disasters and other anthropogenically related disasters as well. So these disasters have actually affected us very much, as you all know, the COVID-19 situation. And these during this period, in fact, the applications of remote sensing and GIS were very much made, and all the kind of the trends in the COVID-19 rise and decline were actually seen and analyzed using the GIS platform. So we have now got digital databases in most of the disasters, and these digital databases are very easy to analyze quantitatively and plot them in a map so that we can see both spatial and temporal variations in disaster situations. Our experts will be deliberating with you the more details in terms of the skills, the knowledge, information, ideas, innovations in these particular areas. I'm just highlighting the broad applications that we have witnessed over a period of more than 3 decades now, when these remote sensing techniques and tools have been utilized for the various type of scientific and social studies. Now, I would like to also tell that besides the mapping, monitoring, and other mechanisms, the remote sensing systems have also been used for the purpose of navigation as well. So we have been using it in different ways. And now not only the satellite-based remote sensing, even there are remote sensing techniques being used with the unmanned aerial vehicles and also the drones and other similar technologies, which have also found very much use even during the COVID-19, when we use them to monitor the containment areas and the activities in those containment areas to keep a watch and also contain the spread of the disease. So these events also been well highlighted when the events happen in inaccessible areas, difficult to reach areas, where the only way out for us is use of remote sensing and GIS, and these tools and technologies, along with the various forecast techniques and mapping techniques, have found a very good place in the field of disaster management studies and management. The various spatial organizations at the international level and in the national level, they have got now a mandate through the space charter to immediately supply the images through the satellites to the concerned stakeholders to help them assess the affected areas and the needs and requirements of the affected population, and also help them in other different ways in which the affected population can be rehabilitated
and the distressed, damaged, and uh, destroyed properties, assets, and infrastructures can be reconstructed or recovered at the earliest possible. So there are rules of remote sensing and GIS in all stages of disaster management, be it pre-disaster, during disaster, or post-disaster situations. And we have been using them in our emergency operation centers also to have a quickest view of the areas. And most of these maps which we are producing now in terms of vulnerability atlases are also digitized on a GIS platform. They are all geo-referenced and well reflecting the uh, ground realities in terms of a good scale which has been used for mapping these areas. Nowadays, instead of using just the mega or macro scale, we are working on micro scale hazard mapping, and this is being helped out by high resolution images of the remote sensors data. So these all are the advantages that I find. There are certain limitations too to these technologies, no doubt, because they may not work well in every area and at every time. Now, through their different type of technologies, now we are using SAR interferometry in SAR technologies or other kind of radar technologies, even to visualize the Earth's surface and conditions when there is dark or there is a thick cloud cover and other such situations, which make it visual range of our images difficult to perceive the ground realities. So now there are a number of technologies, but despite that, because of the Earth structure and Earth shape and the positions of the satellites, and the other parameters which affect the quality of these images will also surely put some limits to our analysis and inferences from these remote sensing images. So I would just like to state that while we take advantage of all the applications of remote sensing and GIS in disaster management, let's be also careful about some of the limitations that it may pose, and it will also may have some kind of errors and uncertainties which also need to be well defined. So not only just propagating that we are very much reliable on this, but also clarifying whatever little shortcomings there may be. So our Indian Space Research Organization, particularly the National Remote Sensing Center, had taken up a national disaster management support program, and they have been actually putting up the various images of the disasters at their portal, which hopefully during these 3 days they will give you more details and what kind of informations can you see. And they are also working on National Disaster Emergency Management Database as well as the various news related to disaster situations within the country. So remote sensing, GIS, as the current technologies and nowadays the latest state of tools like artificial intelligence, robotics, big data analytics, and machine learning, Python, all these are further enlarging the scope of application of these techniques and technologies. So hopefully we will get our conversant with the potential usages and their applications so that all stakeholders can make use of, get benefited of it. And also, we should be able to know who are the right experts and the organizations to whom we should approach in order to understand, in order to get the trainings and the skills on these particular areas.
So NIDM's main mandate as per National Disaster Management Act 2005 is to enhance human capacities in the field of disaster management and linkage, coordination, and networking of different stakeholders for undertaking various activities related to disaster risk reduction and resilience. We are following now the Ndvi framework for disaster risk reduction, which we have four priorities. The first of them is the understanding disaster risk, and remote sensing and GIS provides a very good tool for that priority one. Similarly, there are other priorities that we are doing. For example, sorry, it was not little well. There is climate change studies that we are doing along with the disasters, which are also bringing extreme weather events and other disasters, which are uncertain and unexpected. So we are able to club them together along with the sustainable developmental goals. So all these along with new urbanization agenda and many more such uh, agreements and objectives which the government of India is following in terms of smart cities, digital cities, safe cities, and clean cities. And we are following all these through various agendas. And most important amongst them is Prime Minister's 10-point agenda on disaster risk reduction and resilience, which was declared from 3rd to 5th of November 2016 in the first post-Sendai Asia Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction at New Delhi. So there are a lot of things that I can talk about, but I'll conclude here with the words that the Honorable Prime Minister has said that that ounce of practice is better than tons of preaching. So I would like you to practice use and applications of remote sensing and GIS rather than just learning, because you will get benefited only by practicing, not just by knowing it. So knowing is good, but still, if you will be able to use it, practice it well, then you will surely get more benefited. So I wish you all the best, and I will urge all the participants to make this online training program bilateral by having interactions, discussions, and questions with the distinguished speakers. And I wish all the best to our distinguished speakers also. And I would also like to thank all the distinguished speakers for sparing their precious times and joining with us in this 3 days online training program. And I also like to thank the host organizing team, the other members of the team, including Mr. Gautam, Mr. Haria, Dr. Harjeet Kaur, and Mr. Ajit, Ms. Vinita, and all others who are joining this program today. So, and also wish to thank the speakers for today, including Dr. Sandeep, Neeru Jaiswal, and others who would be joining. So, thank you all and wish you all the best. Wish you all safe, healthy, good quality life on an equitable, justifiable, and right-based manner with good fraternity amongst of all of us. We had need to continue this practice, as Vivekananda has said, arise awake and stop not till the goal is achieved. And the goal of our national policy is zero casualty, disaster free, and resilient nation. So let's work together as a team. Team means together each achieve more. And I hope all of us will join hands in these endeavors. Thank you very much and wish you all the best. किसी शायर ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो सफर इख्तियार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों को तैयारो रास्ते भी इंतजार करते हैं. You have started your journey towards safety and risk reduction as well as enhanced resilience. I wish you all the best in that journey and hope you will reach our destination of zero casualty, disaster free, and resilient nation. But we have to cover many milestones, and the journey is not easy, as said by someone that thinks the woods are thick, dark, and deep. But I have miles to go before I sleep. So I think the way is long.
But let's continue and keep the courage. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके कदमों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है. So the courage and strength within you and your attitude to fight the challenges of the disaster situations will surely bring success to all of us. Thank you very much. Back to you. Sir, thank you so much for your time dragging for us from your busy schedule, and thank you for inaugurating the session with your motivational words. So thank you, sir. So without late, I'd like to introduce our first speaker to audience, Dr. Sandeep R. Oza, sir. He is a scientist G and head of Space Sciences Division, Space Application Center, ISRO, Ahmedabad. He pursued his PhD in physics from Gujarat University in 2007. He presently leading the cryosphere science activities in Space Application Center, and his research work was mainly focused in the field of remote sensing, using data occurred from the various sensors in different regions of electromagnetic spectrum, optical, IR, and microwave for Earth resource science and its application, including cryosphere science and applications. Moreover, also he contributed significantly in the establishment of a state-of-art of image processing and GIS laboratory of Gujarat State Remote Sensing and Communication Center, Gandhinagar, during April 1997 to 2001 June, and which is renamed as an BISAC. So with this, I invite our first speaker, Dr. Sandeep R. Oza, sir. Sir, the floor is yours now. Thank you very much. Okay. Sir, I give one presentation. Yeah. Is it visible? Screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And am I audible? You're audible, sir. Yes. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to thank the respected chair, Professor Surya Prakash ji, for this invitation and giving me an opportunity to, I will say, to share my experiences and discuss with all of the participants. Thank you very much, and thanks. Basically, they deserve who are organizing and coordinating this, say, online training. So Gautam ji and the entire team, I'm conveying my thanks to them also. And and why not all the participants? Thank you very much. So first of all, let me say good morning everybody. तो चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं. और टॉपिक क्या है? तो टॉपिक तो आप जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट. But I will try to emphasize more on geo hazards, and my colleague Dr. Niru will discuss more on hydro related hazards and hydrometeorology related hazards. Okay. So yeah. चलिए थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं. रिमोट सेंसिंग क्या है? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? व्हाट वी मीन बाय रिमोट सेंसिंग? बिफोर आई एम नॉट गोइंग टू गिव एंटायर लेक्चर ऑन रिमोट सेंसिंग, लेकिन रिमोट सेंसिंग को थोड़ा बहुत छू लेते हैं. चलिए, तो ये जो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, यू कैन सी इट इज वन ऑफ द बेसिकली इन सच ए वे satellite is orbiting around the earth. We know, depending on the orbit of the earth, the resolution or say fine resolution of the satellite will be decided. कैमरा कितना बारीकी से देख सकता है. तो इसी तरह से here you can see the bottom left image. You can consider the satellite as an eye in the sky. Okay. और
डिपेंडिंग ऑन हमारी जैसे आंख की नंबर्स भी आ जाते हैं, हम दूर का कम देखते हैं, नजदीक का ज्यादा देखते हैं, कुछ बारीकी की चीज भी हम देख लेते हैं किसी की आंख. तो डिपेंडिंग ऑन द कैमरा एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैमरा एंड ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, we can see either finer or coarser resolution of the earth. So with the movement of the satellite, it will track and it will see the different part of the region, and depending on our the orbits, it will complete the one cycle maybe in 12 days, 13 24 days or so on. हमारी आंख तो जो है विजिबल सब कुछ देख लेते हैं, विजिबल पार्ट्स वगैरह. Similarly, these some kind of camera, we can say there are 4 different camera. It is a EVIF sensor of our resource set. I hope I'm audible ना, not break नहीं हो रही ना आवाज बीच में. गौतम जी, hello, am I audible clearly? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. So you can see डिपेंडिंग ऑन द फिल्टर, क्योंकि हमें कौन सी वेवलेंथ देखनी है तो वहां पे उस तरह का फिल्टर होगा, एंड वो वेवलेंथ जो है सब्सिक्वेंटली द कैमरा के अंदर जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल डिसाइड द से पावर, एंड दैट पावर विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल नंबर, जो कि हमें ग्राउंड स्टेशन पे मिलेगा, एंड दैट वी विल एनालाइज. यही रिमोट सेंसिंग फिनोमिनन को हम एक ओवरव्यू की तरह देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड में जो स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है वो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है. जैसे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ईच एंड एवरी वेवलेंथ कहीं ना कहीं हमें यूज होती है, चाहे वो विजिबल की हो, इंफ्रारेड की हो. इंफ्रारेड में हमें जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर, so that is basically infrared. Depending on the temperature, the emission will vary, and emission will vary. और वो emission जो है कोई सेंसर, उस तरह का सेंसर जो है वो सेंस करेगा एंड हमें अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भेजेगा. तो विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन एंड माइक्रोवेव. So there is a utility of microwave also. But the thing is, visible को जो है यहाँ पे सूर्य प्रकाश आया, sunlight, reflected sunlight is measured by the sensor, and depending on the reflection we can say which is the object. In thermal infrared, emission part is the phenomenon which decides the discrimination, and in microwave either emission, which is known as passive microwave radiometer, or backscatter, which is, if it is an active microwave, then we will have a backscatter, right? It will send also and it will receive also. In optical and thermal and infrared, cloud is the major phenomenon कि जो हमें remote sensing को block करता है. We cannot see below the cloud, but it doesn't mean we will see everything in microwave also. There are frequencies जो कि visible region की ओर है, जहाँ पे cloud जो है वो again an obstacle, but there are many frequencies for which cloud is transparent and we can see below the cloud. So these are, with this brief, let us see what is we known as signature. आजकल के जमाने में तो बायोमेट्रिक आधार कार्ड वगैरह आ गया है, तो बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स वगैरह होता है. सो विथ एनी ऑफ द थिंग्स, हमारी आंख का है, थंब की इंप्रेशन है, फिंगर्स की इंप्रेशन है, many बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स आर देयर, एंड बेस्ड ऑन दैट ये कोई भी जो आधार कार्ड रिलेटेड बायोमेट्रिक मशीन होगा, इट विल रिकॉग्नाइज हु इज द पर्सन. So similarly here, यहाँ पे different अर्थ सरफेस के जो टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. We can see the snow is reflecting very high reflectance in visible and say till red region, in fact majority of near infrared region also. But then from shortwave infrared onwards वो एब्सॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है. यदि वेजिटेशन देखे, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है लाइन, मैं उसको बाद में थोड़ा सा एनलार्ज करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, तो उसका जो है नियर इंफ्रारेड और रेड के बीच में डिफरेंस ज्यादा आता है. तो सिमिलरली डिफरेंट टारगेट्स इंटरेक्टिंग डिफरेंटली इन ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड रीजन. बट व्हाट अबाउट माइक्रोवेव? You can see in this microwave region also
there is a similar kind of optical, there is a signature. This is the emissivity and this is the frequency. At different frequency, emissivity varies for different kind of targets. Whether it is say सी वाटर की फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी एमिसिविटी इस तरह से होती है. इफ इट इज रिफ्रोजन स्नो, ये है इस तरह का बिहेवियर. ड्राई स्नो है तो इस तरह की बिहेवियर. बेसिकली यदि मैं मानूं कि मेरे पास 20 गीगाहर्ट्ज का एक बैंड है, 20 गीगाहर्ट्ज के बैंड में, यह देखिए सी वाटर यहाँ पे आता है, वेटलैंड यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है. लेकिन मेरे पास यदि साथ में 60 गीगाहर्ट्ज की या तो 70 या तो से 80 गीगाहर्ट्ज के करीब कोई चैनल है, तो विथ नियर बाई 20 और से 30 गीगाहर्ट्ज, 20 गीगाहर्ट्ज, 30 गीगाहर्ट्ज एंड 80 गीगाहर्ट्ज, 3 चैनल मेरे पास है, तो आई विल एबल टू डिस्क्रिमिनेट मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर्स. सो दिस इज हाउ we are sending the camera on board the satellite, and on that payload, and that payload will have a multiple say sensing cameras for different frequencies, either optical or microwave. Okay, so now what about our Indian Earth observation capability? Now, India is not isolated from all international bodies also. There is a consortium. So our camera are adding to their capability. Their camera is adding to our capability. But in a nutshell, if what we are having camera from starting from 1 kilometer to 1 meter. We are having different cameras, and not only that, from optical to microwave. We are having capability of meteorological satellites which are able to give us the information 1 kilometer to 4 kilometer kind of products, whereas we are having a camera which will give us 6 meter, 1 meter or better also frequencies. In fact, our synthetic aperture radar recent one just recently launched, which is a C-band SAR. And forthcoming satellites, the upcoming prominent satellites, that is the EO6, now renamed, which is earlier known as OceanSat 3. It is having ocean color monitor, which is a multispectral scanner, imaging scanner in OIR region. Then thermal infrared. It is the first thermal camera from our say ISRO part, which is the polar orbiting satellite. So we will have a thermal infrared part also, and scatterometer. Then we are having a Trishna mission, which is a say 4-channel thermal infrared. So we will get better sensing of the temperature, which will be utilized for say soil moisture and other phenomenon. And another upcoming part, sorry, the upcoming then promising satellite is the NASA ISRO. That is a NISR mission, and that is the dual band, L and S band synthetic aperture radar. So when earlier what we discussed, if different frequencies are there, then combining 2 different frequencies, we can have a better understanding of the subject. So how we can utilize this? As we discussed, there is a spectral domain, different frequencies. Okay, so these are the different wavelengths. ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, ये 3 को मैं आरजीबी कंपोजिट बनाऊं, जैसे हमारे टेलीविजन में दिखाई देता है ना आरजीबी कंपोजिट. सो दिस द आरजीबी कंपोजिट ऐसे दिखेगा. एंड कन्वेंशनली जो फॉल्स कलर कंपोजिट बोला जाता है, उसमें जो रेड टोन है, जहां पे आपको आई थिंक कर्सर मूवमेंट आपको दिखता होगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बोलूंगा टॉप राइट इमेज. दिस टॉप राइट इमेज इज द फॉल्स कलर कंपोजिट. वहां पे जो रेडिश टिंज है, कहीं पे ब्राउनिश दिख रहा है, कहीं पे लाइट रेड दिख रहा है. ऑल दिस रेड आर बेसिकली द कंडीशन ऑफ द वेजिटेशन. ओके, देन देयर इज अ स्पेशल डोमेन कि कितना बारीकी से हम देख सकते हैं. यू कैन सी द मिडल राइट इमेज, वी कैन सी द डिफरेंट फार्म्स आल्सो. ये खेत हैं सब, और खेत में क्या क्या हो रहा है वो भी दिख रहा है. दिस इज द barren land. Then another capability is the temporal domain. How frequently we are visiting that part. That becomes the very say key phenomenon for
checking whether any flood is going on or not, the flood का change क्या हो रहा है, right? मैंने next slide प्रेस कर दिया लेकिन आने में देर लगेगी शायद. Okay, so it is now visible. Remote sensing for vegetation study कैसे हो सकता है? रिमोट सेंसिंग, सेम रिमोट सेंसिंग का यूज वेजिटेशन में कैसे होता है? तो जैसे हमने पहले मैंने बताया था, नियर इंफ्रारेड का जो कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट कॉन्ट्रास्ट विल डिसाइड हाउ हेल्दी द लीफ इज. ग्रीन लीफ होगा तो उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा. द टॉप राइट लेफ्ट टॉप जो टॉप पे कर्व है वो दिखाता है कि कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है. कॉन्ट्रास्ट जैसे कम होता है उसका जो है वो इधर यहाँ पे सिक वेजिटेशन है या डेड हो गया है वो पता चलता है. और ये इसका यदि हम उसको इंडाइसिस बनाए जो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, उसको एनडीवीआई बोलते हैं. This NDVI is nothing but the say normalized difference of near infrared and red के बीच में. और वो हमें ये जो सेंटर में फिगर देता है दिखाई देती है ना, उसमें ग्रीन वेजिटेशन है या ड्रॉट अफेक्टेड वेजिटेशन है, वो प्लांट्स है, वो दोनों का जो डिफरेंस है वो उसके बीच में वो हाईलाइट करता है. जैसे कि हेल्दी वेजिटेशन के लिए NDVI 0.72 आ रहा है, नीचे कंप्यूट करके एग्जांपल में दिखाया है, जबकि ये 0.14 है. सो these will give me the how is the condition of the crop at different places of the country. जो राइट हैंड साइड में आपको एक से हमारे 8 जून का ही 15 डे कंपोजिट दिखाई है. एंड वेर एवर ग्रीन कलर जो दिख रहा है, ग्रीन का वेरिएशन, दैट इज द कलर ग्रीन दिया हुआ है, दैट इज द वेजिटेशन का कलर है, डिपेंड, दैट इज द NDVI इंडेक्स. That's why it is a very useful index to define the drought sensitivity. And अच्छा, मैं अब क्या करूंगा, थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऑडियो पहले आ जाता है, मैंने नेक्स्ट प्रेस करने के बावजूद जो नहीं आता है तो उसको मैं थोड़ा सा जो है डिस्कशन चालू रखूंगा ताकि उसके बीच में मेरी लिंक बनी रहे. Similar to this normalized difference vegetation index, जो कि वेजिटेशन के लिए काम लगता है. दूसरा हम जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है वहां पे ग्लेशियर एंड स्नो, ये दोनों जो है एक हैजार्डस सिचुएशन पैदा करती है. पर्टिकुलरली एवलांच भी होता है, क्रेवासिस होता है, तो ट्रूप्स वगैरह जाते हैं या जो ट्रैवलर्स जाते हैं उसके लिए ये एक जो है हर्डल्स बन जाता है. सो दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड और फॉर मिटिगेशन ऑल्सो. So how we can define or how we can discriminate the snow? For that normalized difference snow index जो होती है, that is वो भी एक दो फ्रीक्वेंसी जो है, दो वेवलेंथ के अंदर का जो रिफ्लेक्टेंस है उसको यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो है वो उसका रिफ्लेक्टेंस हाई है, यहाँ पे कम है, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्नो है. जैसे फ्रेश स्नो है, टॉप राइट में हम देखें फ्रेश स्नो है तो उसकी सिग्नेचर ऐसी दिखेगी, लेकिन वही जो है डर्टी ग्लेशियर आइस है तो वो ऐसा दिखेगा. मॉइस्चर उसके अंदर है तो अगेन कंडीशन बदल जाएगी. तो ये सब चीजें जो है वो हमें स्नो को डिस्क्रिमिनेट करने में काम लगेगी. और उसी को यूटिलाइज करते हुए एक पूरी ग्लेशियर की इन्वेंट्री बनी हुई है. और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर के जो चेंजेस भी अभी हुए थे, काफी बोला जाता था. वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू पार्लियामेंट ऑल्सो कि कितना चेंज हुआ है 2001 to 2017 के बीच में. इट इज नॉट मच एज फार एज स्नाउट और से दिस टर्मिनस इज कंसर्न, चेंज ज्यादा नहीं है. तो ये अलग अलग तरह के जो है ग्लेशियर के फीचर्स हैं. उसको इमेज में देखें तो किस तरह से दिखता है वो यहाँ पे है. वो पूरी की पूरी ग्लेशियर इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज अवेलेबल ऑन द वेदास पोर्टल ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर.
at the end we will have a glimpses from that portal also. Now अब अभी तक जो हमने देखा वो तो ये देखा कि जो ऑप्टिकल में कैसे दिखता है, लेकिन एक जो माइक्रोवेव है जैसे सिंथेटिक एपर्चर रडार, उसकी एक ब्यूटी क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सार इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, डेफिनेटली इट इज द जैसे क्लाउड हो या ना हो वो सरफेस को देख सकता है, एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग मॉनसून आल्सो we can observe our earth और प्रोसेसेस क्या हो रही है, क्या क्या शायद डैमेजेस हो रहा है तो किस तरह से उसका प्रोग्रेस है या मिटिगेशन हो रहा है, तो हाउ वी आर एबल रिकवरिंग द डैमेज, ये दोनों चीज जो है हमें सार से पता चल सकती है. बेसिकली इट इज अ बैक स्कैटर जो कि थोड़ा बहुत पेनिट्रेट भी करता है, तो बैक स्कैटर फिनो उसमें सरफेस स्कैटरिंग भी होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग भी होगा. ये दोनों जो है हमें उसको स्नो की कंडीशन जानने में उपयोगी होता है. इन ब्रीफ वे में मैं बोलूं तो जैसे स्नो मॉइस्ट होगा ना, ड्राई होगा तो उसमें मॉइस्चर कम होगा बिकॉज ऑफ द हीट, उसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड हुआ, तो जैसे मॉइस्चर आता है इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बदलती है. डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बदलती है तो बैक स्कैटरिंग ड्रास्टिकली बदल जाता है. So this is how we are able to discriminate different snow zones, जिसको if it is on glacier भी के ऊपर होता है तो उसको ग्लेशियर फेसिस बोलते हैं. You can see इस तरह से different snow zones हमें पता चलते हैं, उसी का एनालिसिस करके. इनफैक्ट दिस वन ऑफ द इंडाइसेस या इंडिकेटर जो हमें क्लाइमेट चेंज भी दिखाता है. नाउ एक तो हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट है, सार जो है ट्रांसपेरेंट है, वेरी गुड, तो उससे हमें पानी होगा या कुछ भी होगा तो उसका जो है चेंजेस वगैरह भी दिखाई देंगे. इनफैक्ट फ्लड का हम बाद में देखते हैं ये अभी. अगर अनदर कैपेबिलिटी उसकी है ब्यूटी इज वी कैन इंटरप्रेट द इंटरफेरोग्राम आल्सो. व्हाट इज इंटरफेरोग्राम? मानो कि यहाँ पे जो है एक बार हमने यहाँ से मेजर किया, ठीक है, इसको ये जो वेव ट्रेन जा रही है वो ट्रेन में एम्पलीट्यूड भी है और एक साइकिल को हम बोले कितनी साइकिल है, तो ये साइकिल को जो है हम बोलेंगे फेज उसके साथ. तो इसके साथ दो चीज जुड़ी हुई है, एम्पलीट्यूड एंड फेज. और पास वाले जो होते हैं यदि हम मेजर करें तो उसमें फेज डिफरेंस क्या है या एम्पलीट्यूड डिफरेंस क्या है, वो हमें जो है अलग तरह की चीजें बताता है. क्या बताता है? जैसे कि यहाँ पे देखें तो उसको जो डिफरेंसेस है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हमने मेजर किया उसको इंटरफेरोग्राम मानो कि बोलते हैं जनरली. मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो ये इंटरफेरोग्राम की जो हमें फ्रिंजिस दिखाई देती है, ये फ्रिंजिस जो दिखाई देती है यदि वो डेंस होती है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो उसका मतलब है वहां पे किसी तरह का डैमेज हुआ है, या तो सब्सिडेंस है या जो है वो बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड कुछ चीज मूव हो गई है. तो क्या एक्चुअली होता क्या है, हम एक यहाँ पे मेजर किया, फिर टी, इसको मैं T0 बोलूं, फिर T0 प्लस डेल्टा टी, फिर से वो जब मेजर करते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या एम्पलीट्यूड एंड फेज में डिफरेंस होता है उसको देख के ये इंटरफेरोग्राम बनता है. तो इसलिए इंटरफेरोग्राम या तो हमें सब्सिडेंस दिखाता है या इनफैक्ट हमें जो है डिफॉर्मेशन जो है वो भी दिखाता है. तो इसका मतलब ये हुआ सार इज कैपेबल टू एसेस द डैमेज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड. जैसे कि दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, हाउ मच इज द डैमेज वी कैन assess from this, and how much whether that continuously earthquake is tremors going on or not, तो उसका डैमेज पार्ट जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसको वो प्रोसेस को हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं इसके साथ. सिमिलरली यदि हमने जीपीएस वगैरह भी रख दिया है तो वो जीपीएस के साथ जो स्लो मूविंग पार्ट होता है, क्योंकि हम जो इंटरफेरोग्राम से लेते हैं तो इंटरफेरोग्राम से लेते हैं उसको वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा. जैसे अभी प्रोफेसर सैद प्रकाश जी ने बताया था कि कोई भी चीज होती है उसके साथ एरर जुड़ी हुई होती है, तो एरर को कंटिन्यूअसली हमें इंप्रूव करते रहना चाहिए. अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव करना चाहिए, इधर प्रोसेसिंग
और सैटेलाइट पेलोड। तो ये दोनों जो है हम किस तरह से करते हैं, तो जो चीज डिराइव होती है, डिराइव को हम वैलिडेट करते हैं, एंड दैट बेस्ड ऑन दैट वैलिडेशन वी आर इंप्रूविंग आवर टेक्निक आल्सो। एंड एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पेलोड डेवलपमेंट, उसकी एप्लीकेशंस एंड उसका डिसेमिनेशन, वेब बेस्ड जीआईएस डेवलपमेंट, ये तीनों चीज जो है जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करता है सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब यहाँ पे जो है उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल हमने अभी देखा, रिमोट सेंसिंग देख लिया, जीआईएस भी थोड़ा बहुत अभी देखेंगे, लेकिन रिमोट सेंसिंग का एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होना चालू होता है। तो एक हमने लैंडस्लाइड एंड हैजार्ड्स वगैरह देखा, ड्रॉट पहले देखा। तीसरी चीज ये फ्लड डैमेज है, जो फ्लड का प्रोग्रेस या फ्लड का डैमेज, उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पानी जो है, जैसे हमने वहां पे देखा था, पानी की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से पानी जो है उसका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन होता है, तो बैक स्कैटर कम होता है, ठीक है। तो बैक स्कैटर सेंसर जो मेजर करता है वो कम होता है। तो जहां पे डार्क कलर दिखाई दे रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि वहां पे पानी की असर ज्यादा है। तो यही सिंथेटिक पर चढ़ाड़ का जो मैं कंटिन्यूअसली मेजर करता जाऊं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल गिव मी द चेंज इन से change in the water affected area, either river जहाँ पे फ्लो हो ही रही है, उसकी चैनल्स वहां पे भी पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके आसपास का एरिया जहाँ पे जनरली पानी नहीं होता है और पानी दिखता है, तो वो चीज होती है। अब यही इनपुट्स जो है WRF हाइड्रो के अंदर, WRF यदि आप जानते हो कि जो भी IMD वगैरह के साथ, इट इज अ बेसिकली वेदर फोरकास्ट मॉडल, तो उसका एक हाइड्रो मॉड्यूल भी है, रिसर्च मॉड्यूल। तो वो WRF हाइड्रो जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, और ये सैटेलाइट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन अल्टीमीटर, स्कैटरोमीटर एंड सार, वो तीनों चीज उसके अंदर जो है वो हम इंजेस्ट करते हैं, एंड उससे फोरकास्ट होता है। वी विल सी दैट करंट फोरकास्ट आल्सो फ्रॉम वेदास पोर्टल। तो दिस हाउ वी कैन सी कि फ्लड का डैमेज कहाँ कहाँ पे हुआ है, कैसा हुआ है, और या कम हुआ है, क्या सब्सिडेंस कम हुआ है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। नाउ ये चीज आपसे काफी जानी पहचानी है आप सबके लिए कि ये जो डिजास्टर किस किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, लैंडस्लाइड्स वगैरह प्रोन एरिया भी दिखाया है, फ्लड प्रोन एरिया भी है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और ये यही सब जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज रिमोट सेंसिंग एंड GIS का होता है। तो कौन कौन से हैजार्ड्स हम जनरली जिसमें स्पेसबोर्न डेटा काम लग सकता है, तो अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसको ग्लोफ भी बोलते हैं, देन जैसे अभी हमने देखा सब्सिडेंस, स्नो जो है उसकी कंडीशन, स्लोप जो है 3D से मिलता है, ये सबको मिला ले तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट्स फॉर एवलांच फोरकास्टिंग। Then coal fires, means fires either forest fire or coal fire, and desertification और coastal erosion, ये सब चीज ऐसी है जहां पे कहीं ना कहीं हमारा रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट इन GIS एनवायरमेंट उसका यूज हो रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होती है हमारी, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमें मेनली क्या होता है, जो एक तो चीज है क्या हम उसको रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते तो उसको मिनिमाइज, उसका डैमेज कितना कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS जो है वो रोकने के लिए तो नहीं, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए तो जरूर काम लग सकता है। रोकने के लिए कहाँ काम लग सकता है कि मानो कि रिवर का जो है ओवरफ्लो की वजह से जो है रिवर आसपास के रीजन में जो है नुकसान कर देती है, तो ये वाले रीजन रिमोट सेंसिंग एंड GIS से इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और वहां पे यदि जो है वो हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया जिसकी वजह से वो पानी आसपास के रीजन में ना फैले, तो अकॉर्डिंगली वहां पे हम रोक भी सकते हैं, लेकिन हम उसको डेफिनेटली मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। और रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्टिवली कैसे हो, वो GIS के थ्रू हम बना सकते हैं उसकी सिस्टम। लेकिन हम GIS बोलते हैं, भैया GIS क्या है, व्हाट इज द GIS? इट इज नथिंग बट द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यदि लेमन टर्म में मैं बोलूं तो ये एक ऐसी सिस्टम है कि जो
बहुत सारी जगह से इनपुट्स लेती है, वो इनपुट्स को प्रोसेस करती है, प्रोसेस यूजर जैसे बोले वैसे करती है। उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो पॉइंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। पॉइंट क्या होता है, मानो कि जिस जगह पे कोई, एक जगह पे कोई व्यक्ति खड़ी हुई है, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जाता है, या जो है वेल लोकेशन है, तो उसको हम बोलेंगे देयर आर द पॉइंट लोकेशंस। देन लाइंस, लाइंस क्या होता है, तो जनरली हम बोले रेलवे ट्रैक है, रिवर है, फिर ये जो है वो इवन लिनियामेंट्स भी है जियोलॉजी के अनुरूप, तो उसको फॉल्ट लाइन है, तो ये सब को हम लाइन फीचर बोलेंगे। तो दिस इज द पॉइंट फीचर, लाइन फीचर। और यही चीज क्या हमें रास्टर में, मतलब इमेज डेटा में नहीं मिलती है भाई। इमेज डेटा में भी ये लाइन जैसा तो दिखता है, यहाँ पे कर्सर सहित घूम रहा हो तो आप देखिए सेंटर में, जहाँ पे राइट साइड में जो मैंने स्कीमेटिक दिखाया हुआ है, वहां पे ब्लू कलर का जो है वो रास्टर में ब्लू कलर का देखिए लीनियर पिच फीचर दिखाई दे रहा है। वो भी मुझे विजुअली तो मुझे पता चलता है कि ये लाइन है, ठीक है, ये रिवर है, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं है कि ये रिवर है, क्योंकि रास्टर डेटा में इंडिविजुअल पिक्सल इज ए इंडिविजुअल एंटिटी। पास वाले पिक्सल के उसके कोई लेना देना नहीं है, वो पास वाले पिक्सल सेम कैटेगरी का है, बट उसके लिए वो उसका लोकेशन मैट्रिक्स में अलग है, दैट्स ऑल। वो उसको ये, इसको भी बोलेगा कि ये रिवर है, इसको भी बोलेगा रिवर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, वो रास्टर में पता नहीं चलता है। लेकिन वही चीज को हम यदि वेक्टराइज करके दिखाए, जैसे यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो लाइन बताती है ये इंडिविजुअल एक सिंगल एंटिटी है। वो मैं चाहे ये वाला पार्ट बोलूं, कर्सर दिखाई देता होगा शायद, लेकिन अब लाइन में कोई भी दो जगह पे देखेंगे तो वही लाइन पे दो जगह पे वो इंफॉर्मेशन वही बोलेगा कि ये वही लाइन है। सिमिलरली पॉलीगॉन है, जैसे ऊपर टॉप राइट जो पार्ट में दिख रहा है वो ब्लू कलर, येलो कलर एंड रेड कलर, दे आर डिफरेंट पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होता है, मानो कि कोई खेत है या डैमेज एरिया है बड़ा, या रिजर्वियर है, तो उसको मैं बोलूंगा पॉलीगॉन। उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है वो होगा। बेसिकली ये वेक्टर एंड रास्टर कैन कॉम्प्लीमेंट विथ ईच अदर एंड शुड कॉम्प्लीमेंट विथ ईच अदर टू प्रोवाइड यूजर फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, और ये काम जो है जीआईएस करता है। मुझे मानो कि मुझे देखना है कि ये जो है यहाँ पे कस्टमर, स्ट्रीट, पार्सल वगैरह है, तो ये लैंड यूज में किस तरह के कस्टमर्स है। मैं बोलूं कि ये जो ब्लू कलर, कोई मान लीजिए ना कि किसी तरह का ये ब्लू कलर वाले जो कस्टमर्स है वो कितने हैं, जहां पे इस तरह का लैंड यूज हो और पार्सल इस तरह का हो और ये स्ट्रीट के अंदर हो, तो ये कंप्यूटर जो है मुझे इसको प्रोसेस करके दिखा दे, और ये सिस्टम को हम जीआईएस बोलेंगे। तो लेकिन जीआईएस पहले जो था और आज है बहुत बदल गया है। पहले एक छोटा सा जो है उसको हम सिस्टम ही मानते थे, जीआईएस पैकेज, बट नाउ जीआईएस पैकेज इज इमर्ज अलॉट। वो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करता है, बहुत सारी चीजें वेब के ऊपर ही कर देता है। तो जैसे सैटेलाइट से डेटा आया, वो सीधा डेटाबेस के अंदर जाएगा, उसको प्री डिफाइंड एनालिसिस भी हो जाएगा, विजुअलाइजेशन भी हमने जिस तरह से बोला वो विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा, और सीधा प्लानर्स के पास पहुंच जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन मेकर कैन टेक द डिसीजन एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसको भेज दिया जाए। यही चीज बहुत अच्छी तरह से जो है, इनफैक्ट प्रोफेसर एक लास्ट में जिक्र किया था कि ये जो डिजास्टर चार्टर है उसमें यही सब चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है, या तो हो रही है इनफैक्ट। और यही चीज को मैंने थोड़ा सा एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में दिखाया कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा प्लस बोला है, मींस प्लस बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जियो स्पेशल डेटाबेस के अंदर जाएगा, डिसीजन मेकर्स ने जिस तरह से बोला है उस तरह का डिसीजन लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली वो जो है इधर वार्निंग या तो जो है वो अलर्ट इश्यू करेगा, इंप्लीमेंटेशन के लिए जाएगा। तो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, उसमें जीआईएस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इनफैक्ट बैकबोन ही जीआईएस सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग द आइदर डायरेक्टली अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा और डिराइव्ड आउटपुट फ्रॉम द अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। अब
जो है आते हम कि ये जो सब डेटा हो गए, चाहे हमने बोला कि विजुअलाइजेशन उसका होता है, तो यही सब डेटा क्या यूजर एजेंसी है उसको डिराइव करना जरूरी है? क्या वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा? तो बात है कि नहीं, वो जमाना गया कि जब सैटेलाइट डेटा आता था, डिराइव्ड रिपोर्ट आ जाता था, और जो है वो यूजर एजेंसी जो है उसको एनालाइज करती थी, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को भेजती थी, बट इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो वही सब चीजें जो है कंप्यूटर में जो है आप उसको कमांड दे सकते हो, सर्वर को कमांड दे सकते हो, वहां पे वेब बेस्ड सिस्टम होती है। और इसरो के जियो स्पेशल पोर्टल्स जो है उसमें वेदास है जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, मोस्टेक विच इज अ मेट्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, आई थिंक नीरू मैडम इस पे थोड़ा डिस्कस करेगी। तो ये जो है स्पेस एप्लीकेशन पोर्टल है, और भुवन विच इज एनआरएससी पोर्टल, वो भी आई थिंक सब्सिक्वेंट डिस्कशन जो है कल परसों उसमें इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। एंड दे आर एट मेनी प्लेसेस दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, क्योंकि अलग अलग कैपेबिलिटी है, दे आर नॉट रिडंडेंसी कम है दोनों सभी के बीच में, तो अपना अपना उसका यूटिलाइजेशन है। क्योंकि ये मोस्टेक एंड भुवन बाद में डिस्कस होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा वेदास के ऊपर आपको बताऊंगा। तो इट इज वेदास जो है, एक्चुअली वेदास नाम दिया गया, बट इट इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम विच इज एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। एंड उसमें सैटेलाइट डेटा विजुअलाइजेशन नियर टाइम आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। फिर वेजिटेशन एंड क्रॉप मॉनिटरिंग का एक पूरा मॉड्यूल है, डेजर्टिफिकेशन डिग्रेडेशन का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। और सैटेलाइट डेटा को यदि ऑब्जर्व करना हो तो मैं ऑब्जर्व कर, विजुअलाइजेशन मींस क्या क्या सिंपली विजुअलाइजेशन है वो? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, इट इज सिंपली विजुअलाइजेशन। तो क्या क्या है वो? तो उसमें आप जो है एक्चुअली मेरे पास जो अभी आ रहा है ना, मैं एक थोड़ा सा जो एक विंडो है उसको मूव कर रहा हूं मुझे देखने के लिए ठीक तरह से। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए उसमें रेफरेंस लेयर है। तो रेफरेंस लेयर क्या होता है? एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर सैटेलाइट डेटा है, लेकिन देयर आर रेफरेंस लेयर्स आल्सो कि जो उसके साथ हम देख सकते हैं। जैसे पहले बात हुई थी ना रास्टर एंड वेक्टर, तो देयर आर वेक्टर डेटा आल्सो जो हमें रास्टर के साथ देखना है या प्रोसेस करना है। तो उसमें जो है आप टाउन एंड सिटीज की इंफॉर्मेशन है, विलेज बाउंड्री है, जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है ये, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो इसके ऊपर इमेज के ऊपर आप ओवरले कर सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, रोड्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इसका कहाँ यूज होता है हम देखेंगे। क्योंकि क्या ओवरले करके हमें कोई इंफॉर्मेशन में एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, वी विल चेक। देन इमेजरी जो है, जैसे बैकग्राउंड में जो टॉप राइट इमेज है उसमें जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जो इमेज है दैट इज हायर रिजोल्यूशन इमेजरी फ्रॉम भुवन। एंड उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन, चाहे हम बैकग्राउंड में कार्टोसेट, रीसेट, लिस्ट3 एंड एवीएसडी रख सकते हैं। फिर अदर जो है कुछ डेटा सेट भी उसके अंदर है। किसी को फॉरेस्ट कवर देखना हो तो फॉरेस्ट एफएसआई मास भी है, स्ट्रीट मैप है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, सेंटिनल 2 का डेटा है, सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोसिट वाइज हमें देखना हो तो वो चीज भी इसके अंदर दी है। और रिवर एंड स्ट्रीम को साथ में चेक करना हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर क्या है, आप उसको जैसे ये जो इनपुट 1 आउटपुट 1 है, बेसिकली इनपुट 1 से इनपुट 2 को हम आउटपुट 1 से आउटपुट 2 के बीच में स्ट्रेच भी कर सकते हैं, मतलब इमेज एनहेंसमेंट पार्ट इज आल्सो गिवन। और ये जो डेटा है जैसे हमने बोला कि कौन कौन से डेटा उसके अंदर आ सकता है, तो उसमें एवेप्स वगैरह काफी डेटा सेट्स है, जहाँ पे आप देखिए कौन कौन से डेटा सेट उसके साथ में अभी एज ऑफ नाउ, एंड दिस नियर रियल टाइम। ये जो पास्ट डेटा नहीं है, जो इनफैक्ट आज आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट सीन है वो आपको दिखाई देगा। एवेव्स है, सेंटिनल 2 है, मतलब 56 मीटर, 10 मीटर, 250 मीटर, this is the true color composite, inset visible and inset thermal, all this data is available near real time to the users। और ये यूजर जो है वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको प्रोसेस भी कर सकता है और डायरेक्टली दे कैन डाउनलोड द आउटपुट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। जैसे अभी हमने बोला कि प्रोसेस कर सकते हैं, तो प्रोसेस में क्या है, तो उसके लिए एक तो क्या यूजर को अपना एक्सप्रेशन एंटर करना ही पड़ेगा।
तो वो है ये 9 नंबर का जो लेफ्ट में दिया हुआ है 9 नंबर का जियो स्पेशल कैलकुलेटर। तो जियो स्पेशल कैलकुलेटर जो है डिफरेंट फीचर्स को यूज करके हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक ऑन द फ्लाई कंप्यूट करके आउटपुट हमें दिखाएगा। बट देयर आर मेनी थिंग्स कि जो जनरली फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो उसके लिए ये जियो स्पेशल कैलकुलेटर में जाना जरूरी नहीं है। बहुत इमीडिएटली ये जो एक क्विक एक्सेस दिया हुआ है, जैसे मुझे एनडीवी आज का और आज लास्ट ईयर का दोनों का डिफरेंस देखना है, तो ये एग्जांपल दिखा रहा है कि 2 साल के बीच में जून महीने का, मतलब 1 जून को मान ले, तो 1 जून 2021 एंड 1 जून 2022 के बीच में क्या डिफरेंस हुआ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीवीआई। इनफैक्ट हम यदि नॉर्मल ईयर एंड ड्रॉट ईयर के बीच में यदि यही इंडेक्स देखेंगे तो दैट विल गिव मी द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, और इमीडिएटली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डाउनलोडेड ऑल्सो। और कौन कौन सा डेटा सेट है, तो ये डेटा सेट भी जो है वो फॉर इजी एक्सेस यूजर को किस तरह का चाहिए, वो फीडबैक के हिसाब से 16 डे मैक्सिमम भी है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल देखना तो वो भी है। देन मॉडिस का, देन बट लेकिन वो 500 मीटर का है। किसी को हाई रिजोल्यूशन पे देखना है तो उसको हम जो है एविस बेस होता है जो 56 मीटर पे है, और सेंटिनल जो है 10 मीटर डे मैक्स है, लेकिन वो 10 मीटर पे आएगा। तो 10 मीटर, 56 मीटर एंड 500 मीटर, हमें किस तरह का डेटा चाहिए उस तरह का डेटा वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ड्राइनिंग दिस और ड्रॉट मॉनिटरिंग पार्ट। दूसरा जो अभी हमने बोला था कि कहाँ कहाँ पे लाइन फीचर्स वगैरह भी इस्तेमाल होता है, तो ये आजकल के जमाने में सिंपली थ्रेशोल्ड जो है, रिमोट सेंसिंग थ्रेशोल्ड या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दैट इज नॉट सफिशिएंट। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है कि जो बहुत सारी जगह पे यूज होती है, तो वही चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो स्नो कवर यहाँ पे जितना ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो स्नो है। किस दिन का है? 15 जून का है। तो मतलब अभी जब गौतम जी ने बात की थी तो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो उस समय का है। आज का ये पिक्चर और बदल गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ब्लू कलर दिखा है ऑल इज द स्नो कवर उस दिन पे जो था। लेकिन उसका डायरेक्टली यूज क्या होगा हमारे से डैमेज देखने के लिए, या तो से डिजास्टर हो ना उसके लिए, या तो रोड क्लियरिंग के लिए भी बहुत जरूरी बनेगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसा स्नो आ गया है जहाँ पे रोड क्लियरेंस की जरूरत है। और रिमोट एरिया में इस तरह की चीज जो है इजीली हमें पता भी नहीं चलेगी। बट दिस इज द टूल कि जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रेडिश कलर दिखाई दे रहा है, वो रेडिश कलर जो राइट में शायद कर्सर दिखाई दे रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो ये 25 मई 2022 की इमेज है। तो अनंतनाग के पास का ये जो एरिया है पूरा नीचे है, ये रीजन, फिर ये रीजन जहां पे आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दोज रोड्स आर ब्लॉक्ड बाय द स्नो ऑन दैट डे। तो ये चीज जो है वो रोड क्लीनिंग के लिए, तो या तो फ्यूचर डिजास्टर को जो है मिटिगेट करने के लिए ये काम लगेगा, क्योंकि यही चीज है जो एवलांच के साथ भी जुड़ी हुई है। तो सेम थिंग we can immediately get information from the information। और यही चीज जो जरूरी हो तो अलर्ट भी जनरेट हो सकता है और रिस्पेक्ट एजेंसी को मोबाइल्स में पहुंचाया जा सकता है। बट दिस बेस्ड ऑन फीडबैक इस तरह की चीजें प्रोवाइड होती है। एंड यही जो ग्लेशियर के ऊपर चीज होती है, जनरली ग्लेशियर के ऊपर क्रेवासिस वगैरह काफी होते हैं, तो यही स्नो एवलांच और ये सब से जुड़ी हुई ग्लेशियर की इंफॉर्मेशन के लिए ये ग्लेशियर इन्वेंट्री जो है रिसेंटली जो 2015-18 के हिसाब से उसको रिवाइज की गई थी। अर्लियर इट वाज 2003-5, वो 2-3 साल में बनी हुई इन्वेंट्री थी। नाउ इट इज रिवाइज्ड, और ये रिवाइज ग्लेशियर इन्वेंट्री है। उसके ऊपर ग्लेशियर फेसिस जो हमने बात की थी, अलग अलग स्नो की कंडीशन वगैरह पता चलती है, और ये इनपुट्स जो है मॉडल के अंदर जाके स्नो एवलांच वगैरह फोरकास्ट होते हैं। डीजीआरई जो अर्लियर सासे के नाम से जाना जाता था, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस पार्ट, एंड सेम इंफॉर्मेशन हमें फिर जीआईएस के ऊपर मिल जाती है। अब आते हैं फ्लड फोरकास्ट के ऊपर। तो जो वहां पे हमने दिखाया था वही वेदास के ऊपर से लिया गया। ये शायद कल का है, आज 20 तारीख है ना, ये कल की इंफॉर्मेशन है जो मैंने कल रात को रिप्लेस की थी, पहले पुरानी थी। जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी उसमें पुरानी थी, यही अभी ब्रह्मपुत्र में शायद आप न्यूज में भी देखते होंगे।
तो ब्रह्मपुत्र फ्लड का जो है वो WRF फोरकास्ट है और जिसके अंदर सैटेलाइट डेटा इंजेस्ट किया गया है। दिस इज द रिसेंट फिनोमिनन जो कि यहाँ पे दिखाई देता है कि फ्लड फोरकास्ट ऑफ द से रिवर फ्लड। दिस इज द फोरकास्ट, दिस इज नॉट एक्चुअल। तो 2-3 दिन के बाद का जो है वो भी पता चलता है WRF के हिसाब से। सिमिलरली सरफेस रन ऑफ जो है वो भी कंप्यूट करके डिराइव करके यहाँ पे दिखाई दिया जाता है कि सरफेस रन ऑफ डेप्थ कितनी है उसकी। तो दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग टू रिड्यूस द डैमेज। और यदि फोरकास्ट है तो मिटिगेट मिनिमाइज द फ्यूचर डैमेज। ये दोनों में ये इंफॉर्मेशन काम लगती है। एंड सिंस दिस GIS रिलेटेड डेटा एंड इमीडिएटली नियर रियल टाइम हो रहा है तो वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर से वी कैन से टू मिटिगेट द डिजास्टर्स और डैमेज ड्यू टू डिजास्टर्स। हाँ, अब ये एक और भी चीज की जो डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया काफी आगे बढ़ रही है और उसके साथ जो है कदम कदम ये सबको मिलाना चाहिए, अदरवाइज ऑब्सोलेट हो जाएंगे। और बड़ी खूबसूरत पंक्तियों से यही चीज सत्यप्रकाश जी ने बताई थी कि हमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, मंजिलें और भी है। तो ये जो है वो 3D सिटी मॉडल है, उसको पूरा का पूरा क्या है एक्चुअली कार्टोसेट जो डेटा है ना वो स्टीरियो पेयर भी देता है। तो स्टीरियो पेयर को प्रोसेस करके बिल्डिंग हाइट्स वगैरह डिफाइन की जाती है। और ये जो बिल्डिंग हाइट्स है और आसपास का रीजन है वो कभी भी अर्थक्वेक की वजह से डिजास्टर होता है या तो चेंज होता है तो वो डैमेज को हम एसेस कर सकते हैं। वही चीज को मैंने थोड़ा जूम करके अहमदाबाद सिटी के लिए ये दिखाया हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन द कलर, बेसिकली कलर डिसाइड्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये है, मैं उसको 3D में भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये स्क्रीन पे 3D नहीं, अदरवाइज दिस कैन वी कैन यू कैन जूम एंड सी इन 3D व्यू आल्सो, बट इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम, विजुअलाइजेशन विल चेंज। तो जब यदि डैमेज भी होता है या तो फ्लड भी होता है तो फ्लड और उसके साथ ये बिल्डिंग की हाइट जो है अकॉर्डिंगली पता चलता है हमें कि आसपास के रीजन में कितनी सोसाइटीज ऐसी होगी कि जिसमें डैमेज और ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्लड। ये अहमदाबाद एंड गांधीनगर के इम्प्लीमेंट हुआ है, लेटर ऑन दूसरे सिटीज के लिए भी जो है प्रोसेस चल रहा है। प्रायोरिटाइज, इट कैन बी प्रायोरिटाइज ऑल्सो। चलिए, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर साथ में अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दैट इज द इसरो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। तो ये जो एक पूरा चार्टर के लिए इंटरनेशनल जो चार्टर है उसके साथ इसरो जुड़ रहा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो है वो इसरो कर रहे हैं। मतलब इसरो क्यों कर रहा है, तो नेचुरली इसके साथ पूरी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के है, तो इंडिया के वो ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, उसके अंदर के सेंटर्स, ये सब जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के इस तरह का चार्टर बना रहा है। तो उसमें क्या है कि मानो कि उसको मैं आगे जाता हूँ। हाँ, ये वही चीज को यहाँ पे थोड़ी सी शब्दों में बयां किया गया है। So there is the prototype. What it will say, it will provide the data processing platform also and reporting features in the one platform. User need not do anything. मतलब उसके पास कंप्यूटर होना या तो रूम में बैठ के काम करना जरूरी नहीं है। मोबाइल इज सफिशिएंट फॉर देम। यही एक मोबाइल के ऊपर से ग्राउंड के ऊपर उनको वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सकते हैं। he or she can process and get the required information. And उसको यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या है, मानो कि डिजास्टर कहीं पे हुआ या होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है रिस्पेक्टेड कंसर्न डिजास्टर चार्टर में रजिस्टर होती है। जैसे वो रजिस्टर होती है वो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से जो है अलग अलग जगह पे डेटा एक्विजिशन, जितने भी सैटेलाइट इसके ऊपर ओरिएंट हो सकते हैं वो सब सैटेलाइट्स ओरिएंट हो जाएंगे और उसका डेटा जो है एक्वायर होना जो है प्लान हो जाएगा, एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे एक्विजिशन हुआ यूजर को पता चल जाएगा कि भाई ये डेटा आ गया है। जैसे उसमें प्री इवेंट इमेज भी होगी, पोस्ट इवेंट इमेज भी होगी, जितने भी आती है वो सभी इमेजेस आती जाएगी कंटिन्यूअसली।
और वो जो है ये दो इमेज जैसे मिली, वो उसी के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर साथ में डिराइव्ड इंफॉर्मेशन भी दे देगा, क्योंकि जो कुछ डिराइव्ड इंफॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो वो कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ, वो चेंज इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा। अब वो चेंज को हो सकता है वो अलग तरीके से देखना चाहता हो, तो वो अपने तरह से उसको स्टाइल भी कर सकता है, उसको एनहेंस कर सकता है, कलर अलग दे सकता है वगैरह। क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, उसको अपनी जो है कुछ और इंफॉर्मेशन, जो उसके पास वेक्टर इंफॉर्मेशन है, वो वेक्टर इंफॉर्मेशन भी उसके ऊपर ओवरले करना चाहते हैं, तो वो सब ओवरले हो जाएगा। एंड that is also not the sufficient for the users. Many times they want to do their own processing, जो अपने दिमाग में है वो आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो algorithm toolbox is also there. This international disaster charter platform, it is I think at the completion stage, and near future with required formalities वो available हो जाएगा। मैं बोलूंगा इसमें हमारा योगदान है, लेकिन ये पूरा इंडिया की सभी एजेंसीज है वो साथ मिलके इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, वो दोनों मिलके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है काफी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। चाहे जीआईएस हो, ऑनलाइन हो, उसको भी इंप्रूव करना रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। सिमिलरली हमारे डिराइव्ड इंफॉर्मेशन के लिए हाउ टू डिराइव दोस इंफॉर्मेशन, वो भी हमें कंटिन्यूअसली चेक करता रहना पड़ेगा। तो ये जो चीजें है उसको इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर योगदान दे रहा है और इसरो के दूसरे सेंटर्स भी योगदान दे रहे हैं। तो यही है हमारे नटसेल के जो मैंने जो आज तक समझा, मैंने एक बहुत अच्छी तरह से एक सिंपल मैनर में आपके साथ ये डिस्कस करने की कोशिश की, एंड आई होप मैं काफी कुछ कन्वे कर भी पाया हूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। और जस्ट बिफोर मैं उसको खत्म करूं, उसके पहले एक जस्ट आपको ये दिखा दूं। तो हाँ, तो ये जो है वो एक जस्ट पोर्टल है हमारा, जो मैंने अभी वेदास पोर्टल बोला, तो वेदास पोर्टल है जिसके अंदर अलग अलग तरह की आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट, ये सब एप्लीकेशंस है। हाँ, ये देखिए सैटेलाइट डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने बोला था, वेजिटेशन एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, दैट इज मैंने उसमें से कुछ गिनी चुनी एप्लीकेशन दिखाई थी, लेकिन देयर आर मेनी मेनी मॉड्यूल्स। फॉरेस्ट बायोमास के साथ भी है, मोबाइल बेस्ड डेटा कलेक्शन भी है, ग्राउंड ट्रूथ के ऊपर से आने वाली इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके पोर्टल के ऊपर रख देता है। देन प्लेनेटरी साइंस से जुड़ी हुई चीज भी है, जियो स्पेशल एनर्जी मैप्स ऑफ इंडिया, आजकल जो सोलर एनर्जी की जो बात हो रही है उसमें बहुत बड़े योगदान स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से जा रहे हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अर्बन स्पॉल है, हाइड्रोलॉजिकल साइंस एंड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर से अभी हमने ये रिवर फोरकास्ट देखा था, फ्लड फोरकास्ट, वो उसके ऊपर से था। देन देयर आर मेनी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, यहीं से आपको मिल जाएगी। उसको मैंने फिर यहाँ पे स्नोलैंड ग्लेशियर, क्योंकि एक के बाद एक में करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्प्ले करके ही रखा था। यही चीज है, आप ये तो ठीक है, आप कहीं से भी उसको जो है वो जूम आउट जूम इन, ये बहुत सिंपल चीजें कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी चीजें रेफरेंस लेयर से आप ऐड भी कर सकते हैं चाहो तो। और वही चीज जो मैंने पहले बताया था, ये हाइड्रोलॉजिकल पार्ट, तो यहाँ पे आता है। फिर आप उसको जो है फ्लड इंडेक्स देखना हो, वाटर स्प्रेड देखना हो, फ्लड फोरकास्ट देखना हो, तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर ऑन द फ्लाई होती है। और इतना ही नहीं, डेटा एनालिसिस के अंदर जो है आपको टूल बॉक्स भी दिया गया है कि अलग फीचर्स को प्रोसेस करके आपको अपनी अपनी खुद की चीज देखनी हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम दिस वेदास प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। गौतम जी, आई होप मैंने ज्यादा समय शायद लिया भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिया है। No, sir, you took sufficient time and limited time you took, and this is a very good presentation. It's very interesting and sweet, and literally it is a layman conversation, like a layman type of presentation it is. And sir, with your permission, can we take a couple of questions from the audience? Yeah, please. Yes, thank you. Sir, there is a question from the Baleshwar Master.
Respected sir, I have a question whether flood forecasting can be done with the help of remote sensing and GIS techniques. कौन सा? Flood forecasting. Flood. Can I see that question? Yes, sir. Whether flood That- forecasting can be done with the help of remote sensing and GIS techniques. Yeah, flood forecasting. Are you reading from chat? Yes, sir. Yeah, flood forecasting is very much possible, जो कि अभी हमने देखा भी था, and वो जो है वो it is not just detection, it is a real forecast, जो कि जिसके अंदर weather model को use किया गया था with inputs from space data. Can I read question one by one and answer? And if I miss, you can point out those questions. One question was Vedas, Mosdek and Bhuvan available for general public to view? Yes, it is for the general public, and whatever is demand from the general public and organization, it will get implemented on, it needs to be implemented on Vedas, Mosdek and Bhuvan. So मेरी रिक्वेस्ट तो आप सबसे ये है कि नॉट ओनली आप यूज कीजिए, वो आप उसका फीडबैक भी दीजिए कि आपको क्या कमी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम कंटिन्यूअसली ये इम्प्रूव हो जाता है. दिस आर नॉट विद, आप मोस्टेक के साथ जुड़े और भुवन के साथ जुड़े हुए लोग भी ये बात मानेंगे कि हम उससे म्यूजियम बनाने के लिए नहीं रखा है. इट इज अ कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग चीज, उसको इम्प्रूव करते रहनी है. लिंक इज कैन यू, हाँ यही चीज का लिंक. आजकल बस लिंक की क्या जरूरत होती है, गूगल बाबा है, गूगल बाबा के ऊपर आप वेदास, मोस्टेक एंड भुवन एंड इसरो लिख दीजिए, आपको आराम से लिंक मिल जाएगी. इनफैक्ट और बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएगी साथ में. सो अदरवाइज लिंक इज वेरी मच पॉसिबल, वी कैन प्रोवाइड डेफिनेटली. जैसे ये वेदास का है, वो vedas.sec.gov.in, दैट इज वेदास का है. सिमिलरली मोस्टेक का और भुवन का है, बट फ्रॉम दिस गूगल सर्च इजीली अवेलेबल. हाँ, ये डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस दिस डेटा टू सेट अप सोलर पावर प्लांट? भैया इसी के लिए बनाया गया है. ये जो डिमांड, ये जो पूरा भी सोलर का चल रहा है ना, तो उसमें सेक इज वन ऑफ द एजेंसी के जो ये डेटा प्रोवाइड करती है. और नॉट ओनली टू गवर्नमेंट, लेकिन देर आर प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो जिसको ये डेटा चाहिए. तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूजर्स. उन्होंने एक इंटरफेस भी बनाया हुआ है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर प्राइवेट यूजर्स ऑल्सो. एंड उनको जिस तरह से मदद भी चाहिए, वो रिस्पेक्टिव इसरो सेंटर्स की ओर से मदद भी मिल जाएगी. Only these are the questions available, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you for delivering a training session on applications of remote sensing and Thank GIS you. and disaster Thank risk you. management. And, Special I emphasis hope, on. yeah, नीरू मैडम को आप एक्सेस दे सकते हैं. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much for Yeah, it's joining my us pleasure. today, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, good afternoon, ma'am. Yes, very good afternoon. Am I audible? Yeah, you are audible, ma'am. Thank you. I just yeah. So I'd like to introduce our second speaker to audience now. I'm just giving authorizations to Madam first. So just moving towards our second technical session, I'd like to introduce our second speaker to our audience. I'd like to introduce our second speaker to our audience, like Dr. Neeru Jaiswal, ma'am. She's a scientist in Space Application Center, Ahmedabad. She has done her PhD in atmospheric science from IIT Delhi, MSc in mathematics and MTech in environmental engineering from IIT Kanpur, and her research work includes historical cyclone analysis and prediction based on satellite
observations, development of multimodal assemble based approaches for cyclone and monsoon rainfall prediction, urban heat island studies, etc. She has more than 13 publications in reviewed journals. With this, I invite our second speaker. Ma'am, the floor is yours. Ma'am, is it? Ma'am, can you please turn on your mic, ma'am? Am I audible? Ma'am, you are audible now. Just give me a few seconds. There's some issue in my screen. I'll just sort it out. Sure, ma'am. Sure. So, good afternoon, everyone. Thank you, NIDM team, especially to Gautamji for coordinating with us and giving us an opportunity to deliver this talk. My special thanks to the session chair, Professor Suri Prakash, for his encouraging remarks in the beginning of the talk in the session. So, I'll be talking about the application of remote sensing, specifically remote sensing of the satellite data for hydrometeorological events. The background information has already been discussed with my senior colleague Sandeep sir. So it's very easy for me to start with direct to the subject. As the name suggests, hydrometeorological means a combination of hydrology and meteorology. So these are the events, hydrological events. These are the that involves the introduction of interaction of water and energy between the earth, ocean, and different layer of the atmosphere. So now in this talk, we will be talking about these events. This is the outline of my talk. Is the screen is like changing? Can you see this? Yeah, now it is displayed. Thank you, sir. So Thank you, there sir. will be a few second gap between two slides, so take care accordingly. Okay, sir. So in this slide, I'm just showing the overview, the outline of the presentation. This slide, I'll be starting with the overview of the hydrometeorological disasters. Specifically, I will be talking about the role of the remote sensing, being more specific to the satellite data in monitoring, analysis, and prediction of the hydrometeorological events. I'll be emphasizing on tropical cyclones and the extreme rainfall based events. The tropical cyclones, how the satellite data is used in their observation, their prediction, and how the satellite based nowcasting is being done for the extreme rainfall related events. So this all will be covered in this talk. Next. I'm sorry, there's some issue with the screen. It's
sometimes it's getting hang. So natural disasters are basically categorized into the three major geological disasters, biological disasters, and hydrometeorological disasters. The hydrometeorological disasters are the disasters which are indirectly. This is also stated in the WMO report. And sir has also shown few of the hydromet disasters like flood. He has shown the current image of the Guwahati flood also. So these type of hydromet hazards are presently occurring in very high frequency. These are the results of the climate change. Like we all know that today's time we all are witnessing the impact of the climate change. We can see that sea level are increasing. There is a rising sea surface temperature. There is a evidence of rising air temperature as well. And these are resulting the content of water vapor in the atmosphere. And because of this, these hydromet events are occurring and having a more intense scenario as before, like cyclones, floods, and also the events like prolonged heat wave and prolonged cold wave. These all are related to the these hydromet events, and these all are related to the they can be stated as related to the climate change impact. We, as sir has also discussed, we cannot control these events because these are the natural weather event. We cannot tame the weather. We should not also. There are techniques to control the cyclones and all. There have been some experiments also for that, but that are not the correct step. We should not hinder the atmospheric things, but we can have our early warning systems. We can improve our early warning systems so that we can mitigate the losses which are being done, the life and property. We can save those things if we have a prior information of the formation of these hydromet events well in advance. So for that, we need to have certain information for the observation of these system, and we need to have a certain very accurate forecast system. In that, our satellite data is being utilized. So I'll be discussing more on that in the next slides. First, I'll be take up the tropical cyclones. Tropical cyclone is one of the weather event, one of the hazard which is causing a very devastating impacts. These are not a local system, but they are very large system. Horizontally, they are expanded up to 1,000 kilometer in diameter, and vertically they extend up to 10 to 12 kilometer. So these are very huge weather system which are associated with the extreme weather conditions like extreme rainfall, strong winds, storm surge, and these systems are not stationary system. They keep on moving as well. So when they move and when they approach to the land or any coastal area, they create a lot of damage over those areas. These things are like they create flood like situations. They create damage over the infrastructure. Trees were uprooted. These all damage depends on the intensity of the system. If system is weak or it's very intense, depending on that, the damages are being done. But there is a positive part also for these cyclones. These cyclones regulate the water flow in the water cycle in the environment, and they enhances the marine life as well, because when the system are over the ocean, they keep on mixing the ocean water layer. So the layer which is in the deep ocean is actually nutrient rich layer, and because of the cyclone, the water is mixed and the nutrient rich layer comes up, and that creates a enhancement in the phytoplankton productivity and also in the fishery products. So in that way, these tropical cyclones are very useful for the marine ecosystem. Next, actually, is my slides are changing? No, ma'am. No, yeah, I'm also trying to do, and it's there is some issues. Your system is hanging, ma'am. Yeah, I also feel like that. Hello. Yes, sir. Okay, sir. I'll check the system if looks fine. Yes, I'll check.
Thank you, Sandeep sir, for giving me the tips how to change it. So this was, I was talking about the impact of the cyclones and the cyclones, how they are associated with the very severe weather conditions. Next, in this slide, I am showing the top view of the cyclone, which is viewed by the satellite, because our talk is basically on the application of the satellite part. So I'll go into that more. So here, if you see, this is the structure of the cyclone, which is viewed from the top of the system. So these are the clouds. You can see these systems are having a very unique characteristic. They have a very unique structure. They have eye. It is a kind of pinhole, and around that eye you can see the very dense clouds, and around there are some spiral rain bands. So these are the special characteristic of the these cloud system over the cyclone. And if you make a vertical structure of this, you can find this type of structure. So this thing is the eye structure, where the pressure is very low. So these system are very are low pressure system, and the low pressure is found at this eye region. And around the eye there are very tall clouds. These clouds are called eyewall clouds. These are the eyewall clouds, and these are the places where most of the thunder activity happens, and most of the very strong winds also occur over these things. So when we look at the satellite images, we get to know where these clouds are existing, what is the geolocation of the system, and how far the system center these most of the thunder activity are occurring, or most of the strong winds are present. So these all information we get when we utilize the satellite data for the tropical cyclone analysis. So these three characteristics of the cyclone are there: eye, eyewall, and spiral bands. This we get to know from the satellite observations. More on the satellite thing, if we have to know more about the cyclones, we have to have different type of satellite observation. There are many sensors on board, different type of satellites which are used in the tropical cyclone studies. Like one of the satellite is the geostationary satellite. These type of satellites are like that, they are stationary with respect to Earth. It means they move in such a velocity that they look stationary to the Earth. They specifically look at the particular location of the Earth all the time and provide a pictures around those locations. Like here I have shown one example image I have provided here. This is the image of the INSAT 3D satellite. So this full disk image of INSAT 3D is given every 30 minutes, every half an hour from geostationary satellite INSAT 3D, which is our Indian satellite. We have two satellites, INSAT 3D and INSAT 3DR. From these two satellites, we are getting every half an hour such type of images. So these images are very useful in identifying where the cloud systems are appearing, whether they are intensifying, whether they are decaying, how they are approaching. All this I'll also discuss in the subsequent slides. There are another type of satellites which are based on the polar platform. So these are the polar satellites. These satellites move from pole to pole. So since they move pole to pole, they cover the whole Earth. So they are not looking at a particular location, but they are covering the whole Earth. So they are giving us the for all the cyclones, for all the basins. But geostationary will provide us information over only up to the limited scale, whatever is given, limited is whatever is shown in the figure. But the main advantage is that geostationary is providing us the information every third. At two observation in a day, like that, depending on their inclination and all. So the combination of these observations are utilized in the on the satellite data. The application of satellite data in tropical cyclone studies are listed here. Cyclone monitoring is being done, cyclone geolocation estimation, where cyclone is presently present, that is called the center estimation, it's geolocation fixing. Cyclogenesis prediction means when cyclone is forming, how it is forming, whether the cloud systems are developing or not.
All those comes under the cyclogenesis prediction. Cyclone intensity estimation, how intense the cyclone is, means the rotating winds around the center of the cyclone, how intense are they, comes under the cyclone intensity estimation. And the cyclone structural parameter estimation, like in the first image that as I have shown, there you saw the eye region and the region where we have the tall clouds. So that are the region which was the eye wall. There the maximum wind of the system sustained. So that the distance from center to that place is called radius of maximum wind. So all those structural parameters are very much required in the tropical cyclone analysis and its prediction. So these all informations are derived from the satellite products from different type of satellite sensors. After the era of satellite, no tropical cyclone has gone undetected in the global ocean. And worldwide, all the tropical cyclone analysis and prediction are based on the satellite information. In addition to the in situ data, wherever it is possible to achieve, because these are the systems which develop in the open ocean, and it is not easy or it is not possible to deploy the ground-based instrument, in situ instrument over the ocean. So, but when the systems are near the coast, that time there are the observations of the radar that help in the analysis and the forecasting of the system. But when these systems are over the open ocean, only satellite is the information which is being used for the analysis and the prediction of these systems. In this slide, I have shown the first application, that is the tropical cyclone monitoring. As we have seen that the geostationary satellite provide us every half an hour the images of the particular location. Like INSAT 3D gives us the observation over our Indian Ocean. So wherever some low pressure system is developing, then some cloud will appear in the images. Whether these clouds are organizing, they are concentrating, then there is an indication of the development of the system. So these all things are in very advanced technique, these all input data is used, and the indication of the tropical cyclone formation indexes are formed to provide the information of tropical cyclone formation. But after the formation, how tropical cyclones are moving, at what place it is there, that geolocation is fixed using different type of sensors of geosatellites, and every half an hour the tropical cyclone geolocation is estimated using these images. In this slide, I have shown two type of animations. One is the animation from thermal IR channel image from INSAT 3D satellite. Here you can see how cyclone is being tracked, and other image is showing the surface wind velocities, that speeds. So these wind vectors are showing the surface wind structure over some cyclone. This is the cyclone Amphan, which occurred in 2020. So this second wind vector image is from the scatterometer satellite, a scatterometer sensor which is placed on the SCATSAT-1 satellite. So these two type of satellites are placed at different type of satellite platforms, geostationary and polar, but they have their unique type of characteristic, their unique type of products they provide, which are used in the tropical cyclone monitoring. Like geostationary, we are getting the top view, but from the SCATSAT, we are getting the bottom view. So the bottom location of the lower surface location of the cyclone is very, very useful in its geolocation estimation. So here I have shown few images where you can see these are the images which are showing the tropical cyclone orientation. In some images, we can see the center is not very clearly viewed, but in some images, when we enhance it, like top 4 images, you can see there the image is enhanced. So when we enhance the image, the cyclone center is very much visible. But sometimes after enhancement also, we don't get the very clear indication of tropical cyclone center. And tropical cyclone center is very, very important for tropical cyclone analysis. When we work for the prediction, cyclone track, intensity or other parameters, that time also we need to give a very accurate cyclone geolocation. So geolocation fixing is very important, and the only information that we get is the satellite. So different sensors are used in the geolocation fixing of the tropical cyclone center. During day hours, we get the visible images from the geostationary satellite, which are of a very high resolution, nearly 1 kilometer. And these data are used for the cyclone geolocation estimation. But thermal IR images are provided every half an hour and all day and night.
So during night hours, we are dependent on the thermal IR images. And when these two images, geostationary satellite based visible and thermal IR, both images are not showing very clear indication of the center, that time microwave imageries are used. These microwave imageries are basically available from the polar platform based satellites. So here the bottom two images you can see. Here we can see the satellite image where the cyclone center is shown. So this cyclone center is estimated based on the combination of different satellite images. And when the center is not very clear, we use the advanced image processing technique to enhance the images. So this is the first and very basic application of the satellite data to fix the cyclone center. After getting the here in this slide, I'm showing the example of how difficult it is to find the cyclone center in different type of images. Like this is the IR based image, and in IR image we can find out this is the center. But if we get the visible, the center is different. And if we add the microwave, there is a different center. But microwave is not always available, but it is very reliable because it gives us the information of the lower surface. Microwave satellite, as Sandeep sir has also discussed in his lecture, in his talk, that they can penetrate within the cloud and they can see within the cloud, they can see the bottom structure of the cyclone. So these are the more reliable images, but they are not available all the time. So whenever they are available, they are ingested into the schemes and the cyclone center is estimated. This estimated cyclone center is used in the models for further prediction of the cyclone. For cyclone prediction, we means how cyclone is forming, cyclogenesis prediction, where cyclone is propagating, that is cyclone track prediction, how intense the system is, that comes under cyclone intensity prediction, and when cyclone is moving and approaching to the land, when this eye of the cyclone, the center of the cyclone hits the land, that is known as its landfall. So what is the exact location of the landfall and at what time it is hitting the land, that is a very useful information to get the preparedness from the whatever devastation which is going to be happen with the cyclone. So that all prior information is very, very required, and that all we get by the tropical cyclone prediction model. In all these models, we have to have a very accurate initial conditions. And from where we get those initial conditions? We get those initial conditions from our satellite based information, and when it is over the ocean, and when it is near the coast, we get the additional information also from the radar and other in situ instruments. But the basic observations which goes into these models are the satellite information. Now I'll just give you some idea of how the cyclone in cyclone formation, the satellite information is used. Like I'll give you a few examples. So if you are working with the tropical cyclogenesis, means tropical cyclone formation, there are certain conditions which are required for the tropical cyclone formation. Like we have to have a very warm SST, sea surface temperature, which should be greater than 26.5 degrees Celsius and up to certain depth of the ocean, like 60-meter depth. And we should have an atmospheric instability, a high humidity in the mid-level of the troposphere, and pre-existing some disturbance should be there, and a sufficient Coriolis force should be available for the rotating wind. And the very important condition is the wind shear condition. There has to be low vertical wind shear condition. Wind shear means the difference between the lower level winds and the upper level winds. Because the cyclone is a vertical structure, it's not limited to the one level of the atmosphere only. To sustain the whole structure, there has to be a sufficient low degree of vertical wind shear. Means less difference between the upper level and the lower level winds. So all these informations are available from the different satellite products, and these satellite products aids to get the indication of the development of some cyclonic systems. Like here I have given some example of a satellite based derived product which are derived from the INSAT 3D satellite. So here wind shear product is there, vorticity product is there, convergence, divergence, and one important product is wind shear tendency. So these all products are used by the forecasters to get the idea whether some system, whether the cloud system or the low pressure system which is developing over the ocean will further develop or not. If the shear product shows like the system where it is developing or where it will propagate, a high shear condition is there, it means it is unfavorable. So system will not develop. And if system is developed and the shear tendency is like that, it is going to be higher. So it means the system will not sustain. And if it is favorable, it means system may intensify. So these all products
in combination with the other products helps in identifying the favorable conditions for the further development of any low pressure system. Here one example slide I have shown. Some advanced techniques are being prepared for predicting the tropical cyclogenesis using the satellite data. Here one of the satellite image I have shown. This is a thermal IR satellite TIR image from the INSET 3D satellite. See, once when the cyclone forms, there are very different cloud clusters appears in the satellite images, and as the low pressure strengthens, these cloud clusters come together and get organized. So if we get the indication of the merging of these cloud clusters and getting into some organized system, it means these systems are getting intense. So there is an indication of the formation of a more intense low pressure system. So some advanced techniques or some steps are being involved, which I'm not going into detail. So some threshold are generated. So when these merging index are exceeding those thresholds, it means there is a possibility of tropical cyclogenesis. So based on this data and the techniques, we give the alert of tropical cyclone formations. Here I have shown you the images from the INSET 3D satellite imager channel. This imager channel is having 6 channels, 6 type of channels like thermal IR 1, 2, visible, sphere, MIR, and water vapor channel. So all these channels provide us information or the images over the system, over the developing system in the Indian Ocean at every 30 minutes. And every channel is having their unique characteristic. Like I have already discussed, in daytime we use visible channels for the geolocation estimation. Thermal IR is having a capability for day and night observation. So the combination of all these channels are used for the geolocation fixing. But the other channels like water vapor channel is also used for the other type of characteristic structure estimation of the cyclone. Like they have their unique behavior. Like thermal IR channel temperature is always greater than water vapor channel. But when there are high clouds, the overshooting clouds, because of this sensor characteristic and the cloud characteristic, this behavior of temperature changes. Water vapor channel gets higher temperature than the IR channel. So we can identify that at particular these locations, the high clouds exist. So this behavior is found over the eyeball of the cyclones. So these type of images and these type of products, with that we get to know, yes, the cyclone is getting intensified, more overshooting clouds are appearing, and this is the particular location where these are happening. So at those locations, more thunder activity, more strong winds, and more rainfall occurrence can appear. So with the combination of different type of satellite sensors, we get those information from the satellite products, which are used in the tropical cyclone analysis and the prediction. Now I'll come to the intensity part, because when cyclones are appearing, they will damage, they will do the devastation, but that all depends on the intensity of the system. If system is weak, then it will not impact that much. So we don't need very much evacuation and all. But if system is very intense, the system size is too much, so it is going to be affect the more area after the landfall. So we need to have a very accurate information of the tropical cyclone intensity. Intensity means the rotating winds around the cyclone is having how much strength. So the maximum sustained wind around the cyclone near the cyclone center is known as a tropical cyclone intensity. It is also indicating the how much pressure drop is at the center. So pressure drop, the low pressure, and the wind, maximum sustained wind around the cyclone center, these are the parameters to measure the tropical cyclone intensity. So these are measured by the in situ instruments, like in some buoys and some instruments are deployed, but every time these instruments are not available, and it's not possible like every place it is they are there. But the satellites are there which are always looking over the ocean. So based on the satellite, we estimate the tropical cyclone intensity. This is a very important and very primary application of that in the tropical cyclone field for tropical cyclone intensity estimation. For this, a very advanced techniques are developed. The very like in 1970s, a technique was developed by a scientist Dweck, and this technique is being used today also with some advancement, which is called a Dweck technique. This technique is used worldwide in all the meteorological agencies for tropical cyclone intensity estimation.
This is actually based on the cloud pattern analysis based. So we have to have, when we look at the satellite images, we can see there are different patterns in the images. I have listed there 4 patterns. So these are the 4 basic patterns: curve bed pattern, shear pattern, central dense overcast, and eye pattern. I'm not going into detail of each pattern, but you just, I'll giving you the glimpse, like these type of 4 different pattern appear over the cyclone when we view it from the thermal IR channel or visible channel from the geostationary satellite. So looking at those images, we can identify what are the patterns, and there are further steps for each different patterns to get the intensity criteria. Like these images doesn't give us directly the wind speed or the pressure drop, but they give us some number which is called the T number, and there are the conversion tables. Based on that, we convert these T numbers into the pressure drop or into the maximum sustained wind speed, because whatever wind speed is present at the lower surface of the atmosphere, that is actually modulating the wind this cloud structure over the top of the atmosphere. So these cloud top structure are directly linked to the lower surface wind structure. So they are giving us the indication of the wind intensity, the cyclone intensity. So here I have given the some results of INSET 3D based tropical cyclone intensity estimation using the direct technique. In Space Application Center, we use this technique to get the cyclone intensity for every half an hour image what we get from the satellite. Here I have given the one of the cyclone and at its different stages, just to give you an idea how satellites are useful in the cyclone intensity estimation. See, you can see 8 images, and these are some numbers are written over there, T1, T2 up to T8. So at the first image T1, you can see there are the clouds, but they are not very well organized. But as we go far up to T8, so at the 8 number, we can find a very well organized, very well structured cloud where we can see very well developed eye as well. So this is the this is the stage when cyclone is fully developed. So at all the development stage, we have some T numbers associated with them. These T number we have obtained from the direct technique that I have discussed in the previous slides. This is not very straightforward. There are in between very many steps have been involved, but I just want you to give an idea, like these are the techniques which are used in the, which are being used using the satellite data to get the indication of tropical cyclone intensity. And these tropical cyclone intensity estimates are further utilized for tropical cyclone damage assessment and other characteristics or other prediction or other warnings and generating the alerts. Now I come to the prediction part. Like tropical cyclone track prediction, it's because up to now we have discussed the analysis of the cyclone based on the its data what we get from the satellite. So that time we know what is the structure, what is the intensity, what is the eye, where is the eye, and what is the eye wall radius, and everything we are getting using those analysis of the satellite data. But we need to know the prior information of this tropical cyclone, where it is going, where it will hit, and what intensity it will hit, what would be the rainfall associated with that system. So for that, we need to have a very efficient models. And in all those models, for cyclone track prediction model, for cyclone intensity prediction model, rainfall, wind, storm surge, all that we need to have a certain conditions which are required in the models, like which is called the initial conditions. So these are the numerical models which use the initial conditions and the boundary condition. And as good our initial conditions are, the more accurate the cyclone track intensity prediction model will behave. There are other type of not only numerical weather prediction model, but there are different type of models for the cyclone prediction, like statistical model, a dynamic model, and combination of these models are used for the tropical cyclone prediction. But all the model need to have a certain initial conditions like geolocation, intensity, size, and all. So the accuracy of those things depends on the prediction capability. And with the satellite information, we get these initial conditions. These satellite data is assimilated in these models, and the more accurate forecasts are generated. Nowadays, we have a very advanced computational system. We have a good understanding. We have a good infrastructure. So with that, we are getting a very reliable tropical cyclone forecast also. So we have a very advanced model like WRF model, hurricane WRF model, and other models which use the primitive equations, and satellite data is assimilated in those models, and the different parameters of the cyclone prediction are generated. These models require
the accuracy in the location, the initial intensity, the initial pressure, radius of outermost crossbar, and the radius of different intensity of the like cyclone vitals, 34 knot, 50 knot, 64. These are the critical wind radii. So all these information we get from the different sensors of the satellite. Like microwave satellite gives us this wind structure of the cyclone. So these all are ingested into the models, and the track prediction and other intensity and rainfall prediction is being generated. So similarly, when we work with the intensity prediction, we need to have a ocean conditions also, like sea surface temperature, ocean heat content, ocean thermal energy. So for that also we have a satellite products. These products are utilized into the models, and more intense, more accurate tropical cyclone intensity prediction is generated. Now I'll come to another example of another product of extreme rainfall. Like this is the satellite-based product for the nowcasting. Like up to now, I was talking about the tropical cyclone. One more hydromet hazard I want to touch in a very quick way. That is the nowcast. Nowcast is generally a very few hour. What is happening? That comes under the nowcasting. Like extreme rainfall, what will be happen in the next 6 hours, that comes under the nowcasting. In Space Application Center, we have developed a technique. We have a team which work for the nowcasting, and they have developed a module that gives us an alert for the nowcasting through our mosaic sites. So Dr. Bipasha Shukla is working in that. I have taken the slides from her. I acknowledge her for this thing. So main application is of these products are to to know about the extreme events, to work in the rescue operation, aviation industries, event management, and in our daily planning. Like what is happening in the next 6 hours, we get to know from these nowcast products. So major operational products what we give in our site is All India Heavy Rainfall Alerts and the Cloudburst Potential Alerts. All India Heavy Rainfall Alerts are provided at all over India, but the Cloudburst Potential Alerts are provided over only the Western Himalayan region. So the technique which is being utilized, I'm not going into that. There are papers which I have listed in the next slide. Those who are interested can go through the papers and can direct communicate with us also if you are interested to know what are the method involved within that. So the alerts which are provided, one sample result is shown here. So this type of, when you click over the location, you get the information at what time, what rain will, how much rain is going to happen, and what is the area of influence. That information is provided using this nowcast products. And these products are not only limited to particular event, but they are covering very different type of spells. Like we are giving these forecast during the mesoscale convection system also. Like the first thing is recent intense rainfall spell, which was the event over the Gujarat region. That forecast was generated. These are the sample results of the few insert 3D generated products that we provided under our nowcasting thing. Like we have also capable to provide the cloudburst products. This is the sample result of 2019 Uttarkashi cloudburst product. During monsoon also, what rain are occurring, and if heavy rainfall events occur, that alerts are also being generated. This is the example of Kerala heavy rainfall during August 2018. In addition to that, the thunder or storm activity under the nowcast is also provided in this portal. So these all things are being done, and we have developed a model, and through Mosaic you can access the real-time information of these events, and this can be this is provided, this is also communicated also to the concerned persons. This is the example of cloudburst, thunderstorm, and lightning. This is the latest development what we are doing here. The model that have been developed for the nowcasting is named as Netra. It is nowcasting of extreme orographic rain. Like for the cloudburst and all, when we do the forecast, we take care of the orography also. So for all these products, you can access the Mosaic site. And in the right side, I have shown the lightning product. Like when dust storms and all those occurs, they also change some cloud properties. So basically all those things are depending on the cloud
what we are observing from the satellite. Clouds gives us, the satellite gives us the cloud top temperature. So how these cloud top temperatures are changing, what is the evolution of the clouds, how they are changing in the sequence of the images. Those all were studies, those all are used in the analysis, analyzed, and these products are generated. So all cloud microphysical changes during the thunderstorm time. So those all are studied and analyzed, and these products are generated. So this is what we used to do in the nowcast of thunderstorm event, cloudburst event, heavy rainfall event, and the lightning events. Here I just conclude my things. If any questions or any comments are there, they are welcome. Thank you, everyone. Thank you so much for presentation, ma'am. And we will wait for a couple of minutes for participants to solve their questions. Yeah. Ma'am, are you audible? Niru, ma'am? Yes. 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 I think there is no questions from audience, ma'am. Okay. So, ma'am, thank you so much, ma'am, for taking session on the remote sensing application in hydrometeorological disasters and application of satellite data in tropical cyclone monitoring and prediction, and also giving brief about various satellites and the sensors of ISRO, like for monitoring hydrometeorological hazards. Thank you so much for your throwing a light on important components of remote sensing and tropical cyclone intensity estimation, track prediction, and nowcast. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you. Welcome. So, dear participants, this is the end of our first day of a 3 days online training session program. Before concluding today's session, I'd like to convey my sincere thanks to Sri Taj Asin, IPS ED, and Professor Suryaprakash, sir, head GMR Division and Civil and Industrial and Cyber DR Division, NIDM, Ministry of Home Affairs. And also my heartfelt thanks to Director SAC, Sandeep Ozal sir, and Niru madam, and also our panel members and participants. A special thanks to IT section of NIDM who is working with the behind the buttons. And we will meet again tomorrow at the same time. You can join the tomorrow's session with the same link. And thank you for all of you for joining with us. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir.